Let's explore more concepts of depreciation. Now let's look at the definition of non-current assets. Non-current assets के बारे में हमने एक बात की कि these are of course recorded in the statement of financial position, a significant portion of statement of financial position. Secondly, these are either controlled or acquired by the entity. Having said that, अगर हम नॉन करंट एसेट को ख़रीद रहे हैं और इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम पहली वीडियो में बात कर चुके हैं कि उसकी डिप्रिसिएशन होगी और हर साल डिप्रिशिएट होगा वो एसेट. अब जो डिप्रिसिएशन है वो होगी कैसे? उसके पीछे कोई ना कोई एक लॉजिक होगी, उसका एक प्रोसेस होगा जिसके थ्रू आप उसकी ईयरली डिप्रिसिएशन निकालेंगे. अगर हम उसकी डेफिनेशन पे सबसे पहले चलते हैं तो डिप्रिसिएशन से आपको एक चीज़ की वजाहत हो जाएगी कि ये किस तरह का प्रोसेस है और वो किस सिस्टम के मुताबिक चलता है. सो अ सिस्टमैटिक रिडक्शन in the value of non-current asset over its useful life. इससे मुराद ये कि आपने डिप्रिसिएशन का जो भी प्रोसेस लगाना है, it has to be some sort of a systematic approach that you will use. In the value of non-current asset, you know, a non-current asset is a machine, plant, equipment, and over its useful life. इससे क्या मुराद है? अब यहाँ पे बिफोर वी किक स्टार्ट आवर डिप्रिसिएशन का टॉपिक, हमारे पास जो डेफिनेशन है इसका ब्रेक डाउन करना बहुत लाजम है. सबसे पहले व्हाट डज सिस्टमैटिक मीन हियर? सिस्टमैटिक मीन an approach basically, or you can say an educated approach, जिसके मुताबिक आप डिप्रिसिएशन करेंगे. अब वो जो अप्रोचेस हैं इट कुड बी सेम कि आपने हर साल एक अमाउंट की डिप्रिसिएशन करनी या एक सिमिलर अमाउंट आपने डिडक्ट करनी है अपने नॉन करंट एसेट में से हर साल, और इट कुड बी थ्रू अ फार्मूला. एक सेट फार्मूला पहले से हमने लिख दिया और उसके मुताबिक हमने हर साल उसकी डिप्रिसिएशन की. तो सिस्टमैटिक मीन डिप्रिसिएशन. यहाँ पे एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बताना बहुत लाजिम है क्योंकि वो डिप्रिसिएशन से रिलेटेड है. इट सेज द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज कंसिस्टेंसी. Consistency is basically कि whatever policy or estimate, because we know depreciation is a policy and we estimate a reduction in the value every month, every year. अभी जो आपके policy और जो estimate है, it has to be consistently applied every year. Let's say there is this ABC formula that you're using for reduction in non-current value of the assets, that is depreciation. This ABC formula will be used for the rest of the life of the asset. Let's say if you're using that asset for 5 years, the same pattern will be used for the next 5 years. Consistency applies to this. तो हम जो अपनी सिस्टमैटिक अप्रोच है उसको जो पेरेंट कर रहे हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वो कंसिस्टेंसी है. इसके बाद moving on, in the value of non-current asset, we know what non-current asset is over its useful life. Useful life is estimated life span of an asset. Okay, so now we are looking at things in a practical way. So if I ask you, for example, what could be a useful life for a computer equipment? Let's say you have a laptop. We all use laptops. हमें पता है कि the maximum life for a computer or laptop could be 3 years. Because 3 साल के बाद या तो टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो the technology that you're using is obsolete, or maybe there will be some problem in the hardware or motherboard or whatever. तो आपकी जो लाइफ स्पैन है it changes with your non-current asset. A computer equipment could have a lifespan of let's say 3 years. तो हमने जो भी अपनी अप्रोच लगानी है उसके मुताबिक हम 3 सालों के अंदर उसको डिप्रिशिएट करेंगे. एक तो अप्रोच से हम उसकी वैल्यू को ज़ीरो भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि अब कंप्यूटर इक्विपमेंट है तो वो 3 साल के बाद उसकी कुछ ना कुछ स्क्रैप वैल्यू भी होगी. वो एट द टाइम उसकी एक रेजिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू जिसमें वो बिक जाएगा मार्केट में, कुछ कबाड़ियों को बिक जाएगा, कोड़ियों के भाव बिक जाएगा, वो भी एक वैल्यू होगी उसकी.
इसी तरह if you're using a motor van, to bear in this mind, for a motor van, again, UK standards, a motor van UK के अंदर normally a motor car, motor vehicle, जो depreciation है वो usually it's the lifespan of a car is 5 years. After that वो obsolete हो जाती है उनके मुताबिक. Do not look at in the Pakistani perspective कि 10 साल के बाद जो उसकी value वो तो increase हो जाएगी, but it's the market value. We're not worried about the market value at all. We are worried about the book's value. आपने एक चीज़ खरीदी है, उसके डिप्रिसिएशन की और अब उसके बुक्स में आपकी वैल्यू क्या है. वी आर नॉट कंसर्न विद द मार्केट वैल्यूज, वी आर नॉट रीवैल्यूज, वी आर अकाउंटेंट्स. तो इसी तरह बिल्डिंग, इट कुड बी फॉर 20 years, 50 years, 100 years, डिपेंडिंग ऑन द बिल्डिंग और द मटेरियल. तो हर नॉन करंट एसेट की जो वैल्यू होगी और जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होगी वो डिफरेंशिएट करेगी एज पर आपके अकाउंट जो भी आपका नॉन करंट एसेट है. उसके अलावा one last concept before we end this definition is the net book value. What's that? With this net book value concept, there is another concept जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है. The first one is historical value concept. Historical value concept is again an accounting principle जिसके मुताबिक आप अपने नॉन करंट एसेट को रिकग्नाइज करते हैं. Historical value is basically the amount at which a company initially acquires the asset. So जो भी आपने शुरू में जब आपने चीज़ खरीदी थी या नॉन करंट एसेट खरीदा था, जो आपने पेमेंट की थी, जो आपने पैसे टोटल एक्सपेंडिचर किया था एक्वायरिंग के ऊपर, उसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल वैल्यू. अभी जो कॉस्ट होगी नॉन करंट एसेट की, इट्स ऑलवेज द हिस्टोरिकल वैल्यू. इट डज नॉट चेंज विद द टाइम स्पैन. तो फॉर एग्जांपल आपने एक एसेट खरीद लिया, उसको 20 साल इस्तेमाल किया, तो जो बुक्स के अंदर या फिर आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जो उसकी वैल्यू होगी वो हिस्टोरिकल वैल्यू ही चलेगी. जितने पे आपने ख़रीदा था उसी के ऊपर ही आप उसकी अकाउंटिंग करेंगे, हमेशा उसको उतने पे ही रिकॉर्ड करेंगे. और कल को अगर आपने बेचना है तो पहले बुक्स में से आप उतनी ही वैल्यू माइनस करेंगे जितने का आपने ख़रीदा हुआ था. वो एक सिस्टमैटिक अप्रोच है डिस्पोजल अकाउंट की, हम लेटर इन द चैप्टर इन दिस डिप्रिसिएशन के टॉपिक में पढ़ेंगे. अब हिस्टोरिकल वैल्यू का मतलब है कॉस्ट, तो आपने कॉस्ट डाल दी, उसके बाद आप उसमें से माइनस करते हैं एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन. और व्हाट्स दिस नाउ? एक्यूमुलेट का मतलब है मिलाना और डिप्रिसिएशन हमने उसकी डेफिनेशन देख ली है. तो लेट्स से आपने एक एसेट इस्तेमाल करना है 10 सालों के लिए और 2 साल के बाद आपकी जो कॉस्ट होगी वो वही रहेगी जितने पे आपने 2 साल पहले ख़रीदा था. और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन पहले साल के और दूसरे साल के मिला के जो चीज़ बनेगी वो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बनेगी. पहले साल की सिर्फ डिप्रिसिएशन होगी, 2 सालों की 3 सालों की एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन होगी. जब आपने इनिशियल कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो जो आपके पास फिगर आएगा उसको हम कहेंगे नेट बुक वैल्यू. नेट बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने अपनी कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन माइनस करनी है. Again, I'm emphasizing on one thing. This is not the market value. This is the value of your asset in your books. इसलिए इसको net book value कहा जाता है. I hope you have understand all the key concepts in the video. For any further ambiguities or discussions, you can write us in the discussion box.